नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेबल की एंड देन हम बायोंसी की तरफ चलेंगे। फ्लूइड में हमारे पास यहाँ पर एयर, वाटर, सी वाटर, एथाइल अल्कोहल और मरकरी है, जबकि डेंसिटी इनकी दी हुई है, स्पेसिफिक वेट और विस्कोसिटी ये आपने वैसे एज इट इज़ याद करनी होती है। जब हम फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ एयर बात करें तो डेंसिटी इसकी जो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर क्यूब देनी है वो है 1.20 और स्पेसिफिक वेट इसका 11.8 है, जबकि विस्कोसिटी 0.000018 है। वाटर की जब हम डेंसिटी की बात करें तो 998, स्पेसिफिक वेट की बात करें तो 9.790 एंड विस्कोसिटी 0.0010। सी वाटर की जब हम बात करें तो ये हमारे पास 1.026 है और इसमें जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट आ रहा है वो है 10,070 और जो हमारे पास इसमें आ रही है विस्कोसिटी वो है 0.014। एथाइल अल्कोहल में 799 डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट हमारे पास 7,850 और विस्कोसिटी 0.0012 एंड मरकरी में हमारे पास 13,550.20 डेंसिटी 1,33,000 इसमें हमारे पास स्पेसिफिक वेट है और विस्कोसिटी 0.0015। Then we are talking about the buoyancy characteristics of buoyant force. The buoyancy is a fluid force that always act vertically upward. The factor that determine the magnitude of the buoyant force were originally explained by the ancient Greek mathematicians and Archimedes. The Archimedes principle state that the magnitude of the buoyant force acting on a given body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. The latter factor is calculated by multiplying the specific weight of the fluid by the volume of the proportion of the body that is surrounded by the fluid. Buoyancy is calculated as the product of the displaced volume and the fluid specific weight. For example, if a water polo ball with a volume of 0.2 meter cube is completely submerged in the water at 20 degrees centigrade, the buoyant force acting on the ball is equal to the ball's volume multiplied by the specific weight of water at 20 degree. Vd is equal to 0.2 meter cube multiplied by 9,790 Newton meter cube. The more dense the surrounding fluid, the greater the magnitude of the buoyant force. Because seawater is more dense than fresh water, a given object buoyancy is greater in seawater than fresh water because the magnitude of the buoyant force is directly related to the volume of submerged object. The point at which the buoyant force acts in object center of the volume, which is also known as center of buoyancy. The center of the volume is the point around which a body's volume is equally distributed. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल जो आपको मैंने 15.1 बताया था, इसमें हमारे पास जो फ्लूइड्स थे ना, फ्लूइड्स आर मेयर्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 3.3 सेंटीमीटर सेलेंटी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक प्रिंसिपल जिसकी हमने बात की थी वो था आर्किमाइड्स प्रिंसिपल, द फिजिकल लॉ स्टेटिंग दैट द buoyant force acting on the body is equal to the weight of the fluid displaced by the body। यहाँ तक कोई सवाल तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।